Hello friends, let us see some useful idiomatic phrases. The first one is to draw attention, मतलब ध्यान खींचना. So these phrases are simple, but still we don't use them in our language. ये क्यों होता है? Because first of all we don't practice them, and second is हमें इसका meaning मालूम होते हुए भी we don't know the circumstances कहाँ कहाँ use हो सकता है. इसलिए we'll not only learn the meaning, but we'll also see in which circumstances we can use these idiomatic phrases. So to draw attention means क्या होता है? ध्यान खींचना. So ये कहाँ use कर सकते हैं? जैसे we are explaining any place, किसी जगह को हम explain कर रहे हैं और उस जगह पे उसकी खूबी बताते बताते हमें ये बताना है कि खास करके ये चीज़ जो है वो ध्यान आकर्षित करती है. Like the sentence here is, the sunset here draws the attention of everyone, that is every tourist. So here we have seen draws attention. The tourists, their attention is drawn by what? The sunset. Second example is, जैसे we go to some cafe and the cafe is nice enough, everything is good there, but specifically some small thing draws our attention. जैसे एक कैफे में बेल है. So how will we say? A small bell in the cafe drew the attention of every customers. Okay. Third one is, जैसे we go outside, बाहर जाते हैं, in European countries especially, तो the people they perform on the street. So we can say while explaining that कि a street performer specifically drew attention of every visitor or every tourist, like that. Then when we read newspapers, what draws our attention? The bold headlines. So we can say that the bold headlines draws the attention of the readers. Okay. In the past tense we can say the bold headlines drew the attention of the readers. Okay. अब कोई चीज नहीं है उसे हम देखते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ खरोच है, that is if there is a scratch, so what we'll say, the new car, in the new car the scratch drew attention of every person. और हम देख रहे हैं तो what will we say, the scratch drew my attention, मेरी attention को आकर्षित किया उसने. ठीक है, नई चीज है और उसके इस पे अगर स्क्रैच है या if there is a spot there, कुछ दाग है, so the spot, specific spot, red spot, blue spot, it drew my attention. अगर कोई अच्छे से तैयार होके आया है तो what do we say, the striking outfit or his striking outfit drew attention of everyone. There also we use this. इसके बाद कहाँ यूज कर सकते हैं? To draw attention, किसी की एंट्री हो रही है. We have explained that हम वहाँ थे और some celebrity came. So his coming and everyone was attracted towards him. Attention was drawn towards him. So how do we explain this? That his entry drew everyone's attention. Like many stars are there, like Amitabh Bachchan is there. When he enters, attention is drawn by his entry. सबके सबका ध्यान उधर जाता है. I have also heard someone talking about Sanjay that when he comes, there is a Bollywood party, and when he comes in the hall where all celebrities are there, but when he, as and when he comes, everyone's attention is drawn towards him. So it is a type of personality of a person that draws attention of someone. So this example was just to understand. So और क्या attention draw करता है?
We can say a sale signboard. It draws the attention of every person, or the sign of sale drew the attention of every person on the street. ऐसा है. किसी का अनयूजुअल हैबिट है, कुछ हट के किसी की हैबिट है, तो सब में कोई हट के अनयूजुअल हैबिट्स होते हैं. So we say unusual habits, they draw attention of everyone. Okay. Then we say जोर से आवाज आता है, loud noise, your attention of everyone present there. जो प्रेजेंट थे उनका. अगर हम कहीं बैठे हैं, कहीं पार्क में है और कोई लड़का आता है छोटा सा, so he smile or he is playing, it drew our attention or my attention. So we have seen many circumstances in which we can use this to draw attention. We go to the next. Not just for its dash dash dash, but for its dash. जैसे सिर्फ इसी चीज के लिए ही नहीं जाना जाता है, बट इसके लिए भी. सो कोई चीज जानी जाती है मीन्स ऑलरेडी इट इज नोन, तो फेमस तो है ही. ठीक है, अगर किसी मिठाई की दुकान फेमस है किसी की, लेकिन उसमें अच्छा फरसाण भी मिलता है, सो वी से दिस शॉप इज नॉट जस्ट नोन फॉर इट्स sweets, but also for his delicious farsans. Okay, so इस तरह से known for, famous for, notable for, इस तरह से we can use it. Not just for its dash dash and but for its dash dash also, इस तरह से. Okay, so किसी व्यक्ति की बात करते हैं, तो how do we say he is not just famous for his acting but for his philanthropy. What is philanthropy? जो दानी होता है उसको philanthropist कहते हैं. So I am yet to meet a actor who is a philanthropist. So next, जैसे पेरिस जाते हैं, तो पेरिस में क्या है, everyone knows एफिल टावर, बट वहाँ और क्या अच्छा है, आर्ट म्यूजियम is very famous. So Paris is not only known for its Eiffel Tower but also for its art museum. Okay, किसी बुक की बात करते हैं, सो अगर कोई बुक अच्छा स्टोरी है एंड उसमें हिस्ट्री भी है, सो द बुक इज नोटेबल फॉर नॉट ओनली इट्स स्टोरी बट फॉर इट्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट. तो यहाँ भी वी हैव यूज नॉट जस्ट फॉर इट्स डैश डैश, तो जो जिसके लिए फेमस है वो डैश डैश में आता है, और भी किसके लिए फेमस है वो और आगे डैश डैश में आ जाता है. कोई मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट के स्ट्रीट्स पे, देयर आर मूवमेंट्स ऑन द स्ट्रीट्स ना, तो वी से दैट दिस मूवमेंट इज नॉट ओनली अबाउट, किसके बारे में, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ विरोध नहीं है, बट फॉर अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस ऑल्सो. सो इसमें क्या लिया, दिस मूवमेंट इज नॉट जस्ट फॉर इट्स प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ नहीं है, बट ऑल्सो फॉर इट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस. ओके, देन कोई अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छा दिखता है, तो इसे वो सिर्फ अच्छा दिखता है ऐसा ही नहीं है, वो होशियार भी है. तो हाउ डू वी से ही इज नॉट ओनली फेमस फॉर हिज एक्टिंग और फॉर हिज लुक्स, बट ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, but for his he is also known for his intelligence. So we can say that he is not only known for his looks but for his intelligence, or he is admired not only for his looks but for his intelligence. Okay, या इंटेलिजेंस की जगह पे वी कैन टेक एनी अदर थिंग, लाइक हिज ऑनेस्टी है, लाइक हिज काइंड हार्टेडनेस है, ऑल दिस थिंग्स वी कैन ऐड. ओके, we'll take example of country. Japan is not only known for its tech, that is technology, but for its strongly rooted culture. They have not left their cultural aspects. Okay, अगर किसी फेस्टिवल की बात करते हैं, तो दिस फेस्टिवल इज नॉट ओनली अबाउट म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक के बारे में ये फेस्टिवल नहीं है, बट ऑल्सो इट इज अबाउट ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर. So not only just for its
uh, music, but for its capacity to bring people together. So all those circumstances, all those festivals where music is there, primarily people come to listen to the music and they are attracted there. But it is not only about music, but it is to bring people together. Like we have the festival of Ganpati. In Ganpati, it is for 10 days, not only just for religious purpose, but it is to bring people together. So it is also social activity. Like uh, similarly, अगर कोई project है, अच्छा project है, तो this project is not only for its profit, but also for its social impact. तो कोई प्रोजेक्ट अच्छा है तो उसमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, दैट इज ओके, अच्छा कर रहा है प्रोजेक्ट, बट इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट उसमें हो रहा है. तो वी हैव हियर टेकन द सेकंड वन, नॉट जस्ट फॉर इट्स एंड बट फॉर इट्स. इस तरह से थर्ड पे जाते हैं, टाइमलेस स्टाइल. सो टाइमलेस इज द मेन वर्ड. कहाँ यूज कर सकते हैं? Where that which does not go out of fashion. Suppose if you are talking about timeless style, तो ये क्या है? What is the meaning of timeless style? That which does not go out of fashion, which is simple yet which is sophisticated. उसको timeless style बोलते हैं. Now style की जगह पे you can add many things like timeless wisdom. Timeless wisdom में क्या example आता है? Which is timeless? Like our भगवद गीता. It is a timeless wisdom. हमारे वेद है, पुराण है, they are टाइमलेस विजडम. टाइमलेस आर्ट है. आर्ट कौन सा है टाइमलेस? लाइक मोनालिसा, पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, इट इज अ पेंटिंग, so it is a timeless painting. Okay. If you are talking about timeless legacy, so it is like Ayodhya's temple, it is timeless legacy. If you are talking about timeless love, love के साथ भी timeless use हो सकता है. It is. So we have to give example, like to show the love of Lord Ram and Sita. It is a timeless love. Timeless epics. Timeless epics कौन से है? Obviously, you can tell me which are the timeless epics for us. Timeless stories. Which are the timeless stories? Like Panchatantra is there, Jatak Katha is there, Amar Chitra Katha is there. They are timeless stories. Timeless food is also there, like laddu in our Indian culture. They are timeless food. So over a period of time also they do not go out of fashion and they are used. Throughout east, west, north, south, you can find one food which is laddu. So you can say that they are timeless. So time has not drawn the interest in that. So समय जिसका इंटरेस्ट उसमें से छीन नहीं पाया है, that is timeless. And वो क्या है? We can add like that. Okay. So we are trying to see कि ये timeless word कहाँ कहाँ use हो सकता है. If you are talking about timeless monuments, तो बहुत पुराने monuments है. So like Khajuraho is there, Ajanta caves, Ellora caves, they are timeless monuments. Why we say this timeless? Because there are things uh, which has the effect of time. Like there are some old serials and movies which we might be interested, but the next generation they are not interested. They think that these are very old. Sometimes you also feel so. Uh, Time has its effect on every generation. So next generation may not like the previous generation's style, previous generation's hobbies, all these things, but some things are timeless. Like voice of Lata Mangeshkar, it is timeless. Voice of Kishore Kumar is timeless. So we can say this. We can use this word timeless here. Okay. So this is about idiomatic phrases which we have used. The next we'll see is about one word which is aesthetic. Aesthetic is used for what? That which is pleasing to senses. जो हमारे senses को अच्छा लगता है.
we use this for aesthetic purpose. So जो दिखता है specifically वहाँ यूज होता है. तो लाइक कोई अच्छा सजाया हुआ रूम है, कोई अच्छा सजाया किसी का देवघर है, लाइक इट वी हैव देवघर इन एवरी हाउस यूजुअली. तो अच्छा है तो इसे इट इज एस्थेटिक. रूम भी अच्छा है तो इसे इट इज एस्थेटिक, प्लीजिंग लगना चाहिए. अगर किसी का कैफे है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इट इज काम कूल, इसे इट हैज एन एस्थेटिक लुक. किसी सनसेट पे जाते हैं विच इज स्टनिंग, तो वी से इट इज एन एस्थेटिक व्यू. अगर कहीं गार्डन में जाते हैं और वो भी बहुत ही अच्छा है और अच्छे अच्छे फूलों से, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्लावर्स देयर, वी से इट हैज एन एस्थेटिक लुक गार्डन में. So here, for all these circumstances, we can use the word aesthetic. Using these words will make your language rich. So remember one thing: is language once learned is for lifetime. So keep learning and see you next in such an educational field.